हेलो एवरीवन। आज इस वेबिनार में हम बात करने वाले हैं टाटा बीएसई क्वालिटी फंड के बारे में। इंटरेस्टिंग फंड जिसका एनएफओ लॉन्च हो रहा है ऑन द 17th of March, बल्कि लॉन्च हो चुका है एंड इट इज गोइंग टू बी एंडिंग in 9 days, that is on the 28th of March. So इस फंड के बारे में थोड़ा हम बात करते हैं। ये फंड कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, इसकी सूटेबिलिटी क्या है और ऐसे कौन से फैक्टर्स को देख के ये फंड स्टॉक्स को अपने फंड में इंक्लूड करता है। I have with me product head of Tata AMC, Shaili Gang. Shaili, thank you so much today for joining us to explain and to talk to us a little bit about this very interesting fund. जैसे कि नाम में है, it is a quality fund and we will get to understanding what exactly do you mean by that. When we look at your presentation, हमें समझ में आता है that the fund is essentially focusing on some key fundamental ratios. एक तो ROE है, दूसरा है accruals and the third is financial leverage. क्या आप हमें बताएंगे that why these specific metrics have been chosen to define quality rather than things like profit margin या earnings growth जो कि usually investors देखते हैं? Thanks, Mobina, and thanks, Team 5 Paisa. It's a pleasure to be talking to all of you here and to your investors. Yes, quality as a factor takes into account these three ratios, these three metrics. Return on equity measure करता है कि आपकी robustness of the company, of the earnings, and how well the capital is employed, how efficiently the capital is deployed. आपका जो अक्रूवल रेशियो है वो देखता है कि जो सेल्स हुई हैं वो कितनी कैश के जरिए हुई हैं rather than debtors. So cash is king and that comes out in the accrual ratio. And financial leverage जो third metric use किया जाता है to assess stocks, whether to include them in the quality portfolio or not, एक्चुअली चेक्स कि जो आपकी ग्रोथ है वो कैसे फंड की जा रही है. इज इट टू मच थ्रू डेट और इज इट थ्रू इंटरनल रिसोर्सेज, इट इज थ्रू इक्विटी, थ्रू इज इट सेल्फ फंडेड. सो ये तीन मेट्रिक्स लिए जाते हैं. अर्निंग्स ग्रोथ इसका पार्ट नहीं है बिकॉज सी अर्निंग्स ग्रोथ जो है वो एक तो वॉलेटाइल हो सकता है और अर्निंग्स जो है वो एडजस्ट की जा सकती है. बट अक्रूवल रेशियो जो कि आपका क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स मेजर करता है वो इस तरह से लेता है कि जो जितनी भी आपकी अर्निंग्स आ रही है उसमें कैश अर्निंग्स क्या है. सो दैट्स अ मच मोर रोबस्ट वे ऑफ असेसिंग क्वालिटी rather than just earnings growth, because earnings को आप अपनी नेट इनकम को हायर दिखा सकते हैं by deferring expenses, और आप कोई सेल्स को बिल भी पहले कर सकते हैं. You can make these adjustments and you show your earnings higher and उसकी growth आप दिखा सकते हैं. But you can't do too much of adjustments in accrual ratio, and that is why I think accrual ratio is a much better indicator of the quality of the company. ओके, दैट मेक सो मच सेंस एक्चुअली जब आप इस तरह से बात करते हो. जैसे आपने कहा कैश इज किंग. आपके प्रेजेंटेशन में बताया है कि क्वालिटी एज अ फैक्टर हैज प्रोवाइडेड बेटर डाउनसाइड प्रोटेक्शन ड्यूरिंग मार्केट कॉन्ट्रैक्शंस. और अभी जैसे हम देख रहे हैं कि मार्केट में जो वैल्यूएशंस है वो थोड़े हाई है, तो अगर हम करेक्शन फेज में एंटर करेंगे, in some ways we are somewhat in that correction phase, but how significant of a downside protection could this quality factor provide? So historically, if we see data of 15 years, 20 years, even 20 to 25 years, we've seen that quality as a factor it outperforms during the market downturn periods. और मार्केट डाउनटर्न जो है उसका ट्रिगर कुछ भी हो सकता है. इट कुड बी ग्लोबल इवेंट्स, इट कुड बी सम ग्लोबल अनाउंसमेंट्स, इट कुड बी समथिंग वेरी डोमेस्टिक इंटरनल. जैसे अभी इन द लास्ट 5 to 6 months the news flow which is coming in is FII outflows, because US let's say is doing quite good, and there was a lot of news flow, pro US news flow, and money kind of flew there. Or there was news and there has been this discussion on earnings downgrade, which means जितनी भी earnings growth है उसको रिवाइज हो गई है downwards in the last 2 quarters. And उसका रीजन लाइज इन ऑब्वियसली इलेक्शन ईयर था 2024, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग
थोड़ी लैग के साथ हुई और उसका इफेक्ट अर्निंग्स ग्रोथ पे दिख रहा था, which obviously will get adjusted now after a quarter or so. It will the government spending which will happen will start showing up. बट देर आर फेजेस जो कि मार्केट डाउनटर्न फेजेस आते हैं. मार्केट ग्रोथ एंड स्पेशली इन इंडिया it is linear upwards, but it is not very very linear in the month and the week to come. There are phases जब market downturn आता है and quality tends to outperform in that period. ऐसे period में जब बहुत news flow आता है, क्या होता है कि people start focusing on fundamentals, कि इस नंबर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है कि इस कंपनी के मार्जिन क्या है, क्या उसका रिटर्न ऑन इक्विटी है और उसकी वैल्यूएशन क्या है और उसकी जो नंबर्स हैं वो वैल्यूएशन को अभी जस्टिफाई कर रहे हैं. इज इट ट्रेडिंग टू अहेड ऑफ इट्स अर्निंग्स ग्रोथ? सो ये सारा चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान जाता है एंड इन फंडामेंटल्स पे बहुत ज़्यादा जब फोकस हो जाता है तो ऑब्वियसली ये जो कंपनीज हैं, क्वालिटी कंपनीज, दे टेंड टू फॉल लेस बिकॉज they are anyways robust because of high ROE, low accrual ratio, which means they are using more of they are doing more of cash sales, and less leverage, which means they can stand the test of times. So during these times quality tends to outperform. As we go through your presentation, एक और very interesting point आपने include किया है, and that is the earnings beat to miss ratio, जो हम कई बार इतना हम इसके बारे में सोचते नहीं है, but it is seen that earnings का जो beat to miss ratio है, it has been declining in these last 2 years, specifically from Q4 of FY23 to Q3 of FY25. This is not very good news, I imagine, because ratio अगर घट रहा है, it means that there are more companies who are missing estimates than beating estimates. So how will quality navigate this trend of increasing earnings misses? So earnings last 2 quarters से definitely revise हो गई हैं downwards. Earnings growth is there, but let's say FY25 earnings growth is, let's say, 4 to 5% expected. It's not a double-digit growth, earnings growth which we have seen in the last two to 3 years. And next 2 to 3 years it is expected, FY26 से expectations ये हैं कि वापस earnings growth आएंगी. But in between ये जो फेज है इसको नेविगेट करने के लिए, बिकॉज नाउ द एंटायर फोकस ऑफ द मार्केट इज वेदर अर्निंग्स विल बी बैक ऑन ट्रैक और how are the earnings numbers looking. And there was a phase where everything was rising, everything was getting re-rated and the entire market, all stocks were rising. Now is a time when there is a lot of stock specific discussion and fewer stocks will continue to get re-rated और कुछ stocks होंगे जो de-rate हो जाएंगे because अगर उनके numbers सही नहीं. तो ये जो dichotomy है market की, this will show up very clearly in this phase. And during such phases, the quality stocks which are very very robust in their fundamentals of lesser leverage and higher return on equity, and by virtue of doing more sales through cash and not just adjusting the net income, because of this, these kind of companies tend to fall less and they gain more focus, and that is how they tend to outperform during such phases of some bit of earnings, being the whatever earnings numbers are coming out. If they are coming out lower also as per, as compared to expectations, quality portfolios can navigate this phase comparatively, relatively very well. ओके, सेक्टर्स में देखें तो आपका एलोकेशन एफएमसीजी तरफ काफी है, अराउंड 28-29%, फॉलोड बाय आईटी. थोड़ा हमें बताएंगे दैट आई थिंक ये जो फंड का कॉन्स्ट्रक्ट है इज मोर टुवर्ड्स डिफेंसिव सेक्टर्स जो हम इनको कैटेगराइज करते हैं. तो थोड़ा हमें फंड एलोकेशन के बारे में बताएंगे, सेक्टोरली स्पेशली. Yes. So you're right. 28%, 28% is in FMCG. About the next highest sector is IT, and then there is some 20% allocation to consumer discretionary as well. So these are the three sectors. Though is fund ki methodology mein there is a sector cap, and there is a stock cap of 5%. So it tends to be quite diversified. It also has gone and picked up at this stage healthcare, energy. There are other sectors as well. However, it is more allocation. Currently, the allocations are more towards FMCG, IT, and consumer discretionary, and it tends to do that
quality as a factor tends to attract the sectors of IT and FMCG. IT because the ROE of those companies tends to be quite high. They have a well set global delivery system, and they have lower leverage on their balance sheets. They are very, very cash rich. Their debt to equity is lower. For FMCG also, FMCG companies have great brand value, and they are also relatively lesser capital intensive. And because they have greater brand value, they have a great command. They can command, better pricing. So because of these reasons, these sectors tend to have a higher ROE, and they tend to have a lower debt to equity, lower leverage. And that is why these are the sectors which are more attracted by quality factor. Thus, quality portfolio tends to be towards defensives, yes, and defensive portfolios tend to have predictability of return, predictability of earnings rather. They tend to have a relatively better predictability of earnings and stability of earnings. And again, this stability comes into play, a lot when the market participants observe, and during such tough times, during tough phases, they would like to focus more on stability and predictable returns, rather than very very high growth companies जिनकी ROE कम है but high growth बहुत ज़्यादा है. When everything is rising and there is bull phase, people tend to focus more towards such companies where the growth is very very high, but ROE and other factors, maybe those companies could have higher debt on their books. ROE could be low, but growth numbers बहुत high होते हैं. तो bull phases में the market tends to give a lot more multiple to those companies. But during such phases, market comes back with its sanity and tries to give more focus to quality companies who have high ROE and lesser leverage. अब इसी ट्यून में अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल सर्विसेज नोटेबली इज मोर और लेस इन वेटेज या एक्सक्लूड किया है फंड से एंड टिपिकली आप कोई भी फंड देख लो उसमें फाइनेंशियल सर्विसेज आर अ बिग चंक बिकॉज उनका वेटेज भी इंडियन मार्केट्स में काफी ज्यादा है. सो आई नो आपने हमें रैशनल दिया है कि एफएमसीजी क्यों है, आईटी क्यों है, बिकॉज उनके फंडामेंटल्स, उनका जो ब्रांड वैल्यू है, डेट टू इक्विटी, कैश फ्लो वगैरह. कुड यू एक्सप्लेन टू अस अबाउट फाइनेंशियल सर्विसेज और ऐसा क्या सर्कमस्टेंस होगा जिससे वो फंड में आ सकते हैं? So historically also, if you see, financial services as a sector 8 to 10% raha hai, but largely not banks. Those, even if financial services was included, उसमें आपकी capital market companies हैं, वो आई जिनके हर ROE हाई होता है और उनका लेवरेज कम होता है, जैसे आपके एक्सचेंजेस हैं या AMCs हैं या फिर RTA कंपनीज हैं. दोज काइंड ऑफ कंपनीज कैन कम इन. बैंक्स नहीं आते बिकॉज बैंक्स का ROE जनरली लो होता है. उनके रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके रिस्क टेकिंग कैपेसिटी लिमिटेड है बिकॉज ऑफ अगेन द रेगुलेशन. सो उनके ROEs बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ नहीं पाते बिकॉज दे हैव कंस्ट्रेंट्स within which they need to operate, and they cannot just go and lend anywhere. So obviously unki risk taking capacity is limited. It has constraints. They have to maintain certain capital adequacy ratios, so unki regulatory limits hai. So ROEs of banks usually are lower, and obviously उनका debt to equity, debt भी उनकी books पे ज़्यादा होता है because they have branch costs, employee costs, technology costs, so they are a high cost business that ways. So because of these reasons, financial services में banks आपको नहीं लगेंगे that इस portfolio में है. But Mubina, one important thing which everyone needs to understand is आप सारे ही मेट्रिक्स एक साथ नहीं ला सकते. किसी ने मुझसे पूछा था कि ओके आप ग्रोथ, ईपीएस ग्रोथ का मेट्रिक उसमें क्यों नहीं ऐड कर सकते. क्वालिटी कंपनीज तो आ गई, बट क्या वो हाई ग्रोथ कंपनीज हैं? कोई फिर कहेगा कि अरे लो वॉलेटाइल हैं कि नहीं, आपने क्वालिटी तो ले लिया बट उनकी वॉलेटिलिटी भी कम होनी चाहिए. कोई कुछ कहेगा. सो आई थिंक जो एकेडमिशियंस ने डिफाइन किए गए हैं फैक्टर्स और उनके मेट्रिक्स, अगर हम उनके हिसाब से देखें तो क्वालिटी जो एक मेट्रिक है वो
बहुत ही अच्छी तरीके से S&P के मेथोलॉजी के हिसाब से डिफाइन किया गया है, और ये 3 मैट्रिक्स के हिसाब से जो पोर्टफोलियो बेस्ट आता है वो एक बहुत ही बढ़िया आउटकम है, और आई थिंक हमें उस तरह से उसे उस लेंस से देखना चाहिए। इसमें फाइनेंशियल सर्विसेज एंड बैंक्स स्पेशली आना मुश्किल है। अंडरस्टूड, ठीक है। थोड़ा परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। इन द लास्ट वन ईयर वी सीन के जो बीएसई क्वालिटी इंडेक्स है स्लाइट अंडर परफॉर्मेंस है वर्सेस लार्ज कैप एंड मिड कैप। हाउएवर, जैसे हम हमेशा कहते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को खास तौर से दैट you should not look at short term performance, you have to look at long term performance. So if you could still tell our viewers that what contributed to the underperformance, because ये एक obvious question है जो हमारे viewers के mind में होगा, and also stressing on the importance of long term. Yes. So, as you rightly said, Mubina, if you look at long period returns, quality as a factor, BSE quality index has outperformed Nifty 50 and uska jo khud ka universe hai large and mid cap 250 by a very good margin. Whether you look at 3 years point to point, 5 years point to point, 7 years or 10 years point to point. Even if you were to take rolling returns, starting 1 year, 3 year, 5 years and 7 years, वो भी बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस है। इनफैक्ट अगर आप रोलिंग रिटर्न्स लेते हैं 5 years के एंड फॉर अ पीरियड ऑफ गुड 15 लास्ट 20 years, यू विल सी दैट मोमेंटम एक फैक्टर है जो टॉप है अमंगस्ट ऑल फैक्टर्स, बट बीएसई क्वालिटी कम्स इन नेक्स्ट because it falls less during downturns and captures a reasonable upside when the markets are in bull phase. Of course, bull phase में momentum बहुत अच्छा करता है, it outperforms, tends to outperform, and quality is something which outperforms during the downturn. So that is why on a point to point basis and a rolling return basis across periods, quality has outperformed Nifty 50 and uska khud ka universe BSE large and mid cap 250. In market downturn phases, quality has outperformed other factors as well. Now, to your specific point on the last 1 year, which is very, very valid. Yes, you are right. Well, last 1 year point to point में देखेंगे, rolling return में नहीं. Rolling return में भी quality जो है वो outperform कर रहा है 1 year basis पे by a good margin. As on 24th February, if you see, I think the 1 year return of quality is good 24%, whereas Nifty 50 is 18%. But when you see just point to point between two dates, you are right, quality has underperformed. Largely उसका रीजन ये है कि एफएमसीजी एंड आईटी जो लार्जर सेक्टर्स हैं वो लास्ट फ्यू मंथ्स में भी करेक्ट हुए हैं अलॉन्ग विद अदर सेक्टर्स, एंड फाइनेंशियल सर्विसेज जो इसमें प्रेजेंट नहीं है वो बढ़ा है. बट वी नीड टू सी द रोलिंग रिटर्न ऑल्सो ऑफ 1 year, बिकॉज रोलिंग रिटर्न इज अ मोर रियलिस्टिक सिनेरियो कि आपके जो क्लाइंट हैं कोई भी एक दिन आ सकते हैं. एंड रोलिंग रिटर्न कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि 1 जनवरी 2024 को लास्ट 1 year रिटर्न किया था, 2 जनवरी 2024 को लास्ट 1 year रिटर्न किया, और उसका एवरेज लिया जाता है. आपके क्लाइंट साल के किसी भी दिन में आ सकते हैं, एंड व्हेन यू टेक पॉइंट टू पॉइंट यू आर जस्ट टेकिंग 2 dates, तो इट कैन बी एनी नंबर, but rolling return is a more realistic number. So that for 1 year is also a great number. I think I would like to highlight that piece here. Okay. आपके कुछ 70% से ऊपर 77% of holdings are in large caps. So could you tell us how would this be different from a large cap passive fund? So that's an outcome. Market cap का जो split है incidental, वो outcome है एक. इसका input यही है कि ये जो 3 metrics हैं उन पे इक्वल वेटेज दिया जाता है. आरओई, एक्रूअल रेशियो और डेट टू इक्विटी लेवरेज रेशियो जो कहते हैं, इनको इक्वल वेटेज दिया जाता है. हर एक स्टॉक का एक कंसोलिडेटेड क्वालिटी स्कोर कैलकुलेट किया जाता है फॉर ऑल दीज 3 मेट्रिक्स, और जो टॉप 30 स्टॉक्स हैं वो सेलेक्ट किए जाते हैं. फिर मार्केट कैप के बेसिस पे अगर जिस स्टॉक का मार्केट कैप, फ्री फ्लोट मार्केट कैप ज़्यादा है, उसे, so that free float market cap is multiplied by the quality score and then accordingly weights are given. So that's the input. उसके बाद ये जो market cap split है ये एक output है. तो it tends to be, but yeah, quality tends to have a tilt towards large cap portfolio. And I think again, as I look at it, एक portfolio जो होता है उसमें आपकी market cap cover होना चाहिए. So you will have flexi cap funds and multi cap funds on the active side. You will have market cap passives to cover that space. Then you will like Nifty 50 or mid cap 150 or small cap 250. ये आपके passive funds हो गए, आपके active funds हो गए, market cap का space cover हो गया.
सेक्टर का स्पेस भी आप एक्टिव एंड पैसिव के मिक्स से कवर कर सकते हैं। एंड फिर आपका जो फैक्टर का स्पेस है वो लार्जली आपका पैसिव्स के थ्रू ही कवर होगा, और उसमें मोमेंटम एक होना चाहिए टू कैप्चर द अपसाइड ऑफ द ड्यूरिंग द अप मार्केट phases, and quality would be one good factor to capture the outperformance on the down market phases. So I think the portfolio should look as balanced as this, rather than comparing bucket to bucket. I think it's important to have all three pillars and all three buckets in the portfolio, to have a very, very diversified and complete portfolio. Understood. Could you explain this buffer rule where जो top 24 companies है are selected, but जो existing constituents ranked between 25 and 36 are retained until reaching 30 stocks. तो आप हमें इस rule के बारे में बताएंगे, and also how it helps manage index turnover. So top 30 stocks basis the consolidated quality score, and of course adjusted for the free float market cap, वो लिया जाता है। अब उस बेसिस पे अगर आपके स्टॉक्स की रैंकिंग टॉप 30 स्टॉक्स लेते हैं, अगर 36 तक चली गई है तो भी इट कंटिन्यूज टू स्टे इन द पोर्टफोलियो, दैट इज बफरिंग, बिकॉज वेन एवर यू रन सेमी एनुअली ये रूल्स रन किए जाते हैं। हर सेमी एनुअल रन पे अगर वो स्टॉक 30th से 31st पे आ गया है तो आप उसको अगर बाहर निकाल देंगे, हो सकता है बिकॉज इट इज एट द कस्प वो वापस से नेक्स्ट रीबैलेंसिंग में या रिकॉन्स्टिट्यूशन में वापस अंदर आ जाएगा। सो इट unnecessarily increases the churn ratio, and that is why some buffering का प्रोविजन इसमें दिया गया है, विच मीन्स कि जब तक स्टॉक 36th रैंक के नीचे नहीं जाता है क्वालिटी स्कोर कैलकुलेशन में, वो इस पोर्टफोलियो में रहता है। जैसे ही स्टॉक 36 के नीचे चला गया, इट गेट्स रिप्लेस्ड बाय द अदर स्टॉक विच वुड हैव बीन द 31st stock in the rerun. Yes. Understood. It helps the churn ratio. It helps the churn ratio, and finally तो उस पोर्टफोलियो को रेप्लिकेट करना है तो it optimizes transaction cost and yet continues to include the right quality stock. So it's a great optimization tool. ठीक है। फ्रॉम एन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स पॉसिबल कि कुछ इन्वेस्टर्स के पास जो ट्रेडिशनल इंडिसेस है जैसे निफ्टी सेंसेक्स, उनके जो एक्सपोज्ड फंड्स है वो उनके पोर्टफोलियो में शायद ऑलरेडी हो गए। सो लुकिंग फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, आप हमें ये क्वालिटी फंड के सूटेबिलिटी के बारे में बताएं। वेयर डज इट फिट इनटू द पोर्टफोलियो? व्हिच काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स शुड आल्सो इन्वेस्ट इन इट? सो हर एक के क्राइटेरिया जैसे अलग है। जैसे मार्केट कैप जो निफ्टी 50 या दूसरे मार्केट कैप इंडाइसेस हैं, उनका क्राइटेरिया है फ्री फ्लोट मार्केट कैप। मोमेंटम है, उसका क्राइटेरिया होगा प्राइस डिफरेंशियल 6 months एंड 12 months। क्वालिटी का क्राइटेरिया वो 3 मेट्रिक्स हैं। अब उस 3 मेट्रिक्स में जरूरी नहीं है कि वो सारी उस क्वालिटी कंपनीज या क्वालिटी फैक्टर का ऑब्जेक्टिव है टू टेक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज इनटू द पोर्टफोलियो which will stand the test of times and outperform during market downturn phases and continue to capture upside during market up phases as well. So that's the criteria. Comparing it, as I said, एक पोर्टफोलियो के 3 हिस्से अगर हम देखें कि मार्केट कैप फंड्स भी होने चाहिए रिप्रेजेंटेड इन द पोर्टफोलियो, सेक्टर फंड्स भी होने चाहिए। फैक्टर एक अनदर लेंस ऑफ इन्वेस्टिंग है। जैसे एक्टिव और पैसिव 2 लेंस ऑफ इन्वेस्टिंग है, वैसे ही फैक्टर एक लेंस ऑफ इन्वेस्टिंग है, और उसकी भी रिप्रेजेंटेशन पोर्टफोलियो में अच्छी तरह होनी चाहिए। एंड लाइक आई सेड, फॉर एग्जांपल अप मार्केट के लिए मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन जरूरी है टू कैप्चर अप मार्केट फेजेस, उसी तरह से क्वालिटी रिप्रेजेंटेशन जरूरी है टू कैप्चर down market phases. And that is why I don't think a commonality between various indices should be done from my perspective, because इनका जो approach है वो बहुत ही different है। इनके जो inputs हैं to choose and measure quality and to pick stocks is very, very different from what the input and matrix is of, let's say, a Nifty 50 or a Nifty mid cap 150. So the comparison is not there. However, I would just like to highlight that इसमें banks आपको नहीं मिलेंगे, and you have many other funds where banks are there and can be taken exposure to. But if you want just to look at the differentiation between, let's say, Nifty 50 and this, banks are a big differential between these two indices.
Okay. Just to reiterate again for all of our viewers that अगर हम एक्सपोजर लेते हैं क्वालिटी फंड में और अभी जो मार्केट सिचुएशन है ऑफ कोर्स वी हैव सीन क्वाइट अ करेक्शन इन दीज लास्ट 6 to 7 months आपने कुछ फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं जिसकी वजह से वी हैव सीन अ मार्केट करेक्शन नाउ perhaps in the next leg we're going to see movement in interest rates as well. So could you tell us that how do you expect these kind of stocks to perform in this new, environment that we'll be entering? So we already have change of market scenarios post September. We've already seen that it started with FII outflow discussions and happenings. Then we entered into a phase where US looked very good and monies flew to US. Then we came into earnings downgrade discussions because Q2 earnings and were bad or not up to the expectations, I would say. And Q3 earnings were also expected to be maybe not in line what was the expectation at the start of the financial year. We entered into that phase, and then from the other side, the news flow which keeps coming in, there is a U-turn which is being seen in the US, where dollar yields, everything was rising there, and US markets now everything is dollar has corrected to 103 levels. Bond yields, US 10-year bond yields are down. US markets are going through a bit of more volatility. At least they don't have this up tick just continuing to be there. On the other side, China recovery stimulus measures were announced somewhere in October. There is a China Chinese markets are back on the map because of the deep seek, and they put a stamp that we are as good in tech as US tech. Europe is on a very different path, wanting to become more independent and not rely less on US for their energy and defense needs. So there is a change of situation across things, and at our end I think we feel that the earnings the focus will shift more towards earnings growth in India, and that is the cues what markets will take. It could be like this for a little while, for a quarter or so, before earnings growth starts coming back up. And during such phases where a lot of things are changing, there is volatility, there are market down periods, and during such phases, quality tends to perform better, it falls less because the robustness of these companies lie a lot in the numbers that they are. And right now is the time where people focus, market participants focus on numbers of the companies, and that is why quality tends to fall less. So if investors believe that the journey of the market will be strewn with phases of market up market phases as well as down market phases, if that journey is not, it is upwards, but it is not linear upwards, it's not a straight line upwards, it is definitely strewn with these market downturn phases also, or sideways market phases, then quality as a factor, if it can outperform during these phases and hold your portfolio and cushion it to fall less, and continue to capture the upside when there is a bull phase, reasonable percentage of the market upside. I think then over long periods, 10 years, 15 years, 5 years, 10 years, 15 years, the quality inclusion in the portfolio, benefits quite a bit, quite a lot. Okay, I think that brings us to the end of this conversation. It's been a very insightful one, Shelly. Thank you so much इस webinar में join करने के लिए, and all the very best for the NFO. Thank you, Bhabina. Thanks for everyone for joining in. Thank you. Remember, this is, of course, the Tata BSE Quality 30 Index Fund, and it is open currently. 17 March se khula hua hai, and it is ending on the 28th of March. This was all the information about the fund. Thank you so much for watching.